Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Our today lecture is about organometallic compounds. In this lecture we will study about introduction of organometallic compounds, solvents that are used, condition of reactions, nature of Grignard reagent, formation and reactivity of Grignard reagents with their examples. So let's move towards our first slide about organometallic compounds. Organometallic compounds are very stable reagent in organic chemistry. Grignard reagent was first discovered in 1900 and many useful synthetic applications are also invented after this. After 1930s, many other reagents are also invented, but organo-magnesium compounds are relatively more stable. We will study what are the organometallic compounds. Organometallic compounds are those compounds in which a metal is directly linked to a carbon. Like you see in pictures, carbon is directly attached to a metal. Metal is magnesium. If such compounds in which metal is directly linked to a carbon, then we will call these compounds are organometallic compounds. Organomagnesium compounds are invented by Victor Grignard. So by the name of scientist, we will call it Grignard reagent. For its invention and its synthetic application, the scientist was awarded by Nobel Prize in 1912. Organomagnesium halides are called Grignard reagent. Now we will study about the general formula of organomagnesium compounds. A simple alkyl halides, when react with magnesium metal in the presence of ether solvent, they react to form Grignard reagent, which is shown as RMgX. Grignard reagent formed by the reaction of alkyl halide on magnesium. We use solvent which is ether because ether provides us ligands that stabilize the reaction. Other solvents like alcohol, oxygen, these are not suitable solvent. Now here a question arises that why we don't use oxygen, alcohol as a solvent in organomagnesium compounds. We don't use these solvents because it decomposes the strongly basic organometallic compounds. क्योंकि ये जो बेसिसिटी होती है उसको डिकम्पोज कर देता है, इस वजह से हम लोग इन सॉल्वेंट को यूज़ नहीं करते. Solvents that are used in these reactions are first is diethyl ether. It is a particularly noble solvent and it is used for the development of Grignard reagent. Diethyl ether has aprotic nature. Aprotic means that solvent do not have liable hydrogen, यानी कि इसके पास एसिडिक या बेसिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. और हम ये भी कह सकते हैं that solvent has not hydrogen bond donor. The next solvent used is tetrahydrofuran. By using this solvent, oxygen will not mix with the solution and reaction proceeds smoothly. The next solvent is dioxane. 1,4-dioxane mostly used because it have boiling point 101. The next question arises that if we have two solvents, then why we will use dioxane? We use dioxane because it is miscible with water and is hygroscopic. जो डाईथाइल ईथर है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मिसिबल नहीं होता और ना ही ये हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है कि ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि जो डाईऑक्सोन्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक भी होते हैं और मिसिबल भी होते हैं. इस वजह से वो कंपाउंड्स जिनमें लिटिल बिट मॉइस्चर होता है तो वो उन कंपाउंड्स के लिए ये यूज़फुल सॉल्वेंट है. नेक्स्ट इज अबाउट द कंडीशन फॉर रिएक्शंस. टेम्परेचर शुड बी लो, एटमॉस्फेयर शुड बी इनर्ट लाइक देयर विल बी नो ऑक्सीजन प्रेजेंट. Reaction condition should be dry. Now what is the nature of bond in the Grignard reagent? The one is the covalent bond and the next is the ionic bond. The ionic bond nature is more strong and is more stable as compared to covalent nature because in ionic bond ions are present. यानी कि ionic bond में ions dissociate होते हैं. लाइक अगर हम लोग Grignard reagent की यहाँ पे एग्जाम्पल देखें CH3Mg Br, अगर ionic bond के जरिए इसको डिसोसिएट करें तो ये CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होगा. इस वजह से आयन डिसोसिएशन एबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आयनिक नेचर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड नेचर. वी मोस्टली यूज अल्काइल और अलाइल कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट इज मिथाइल. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द नेचर ऑफ मिथाइल इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मिथाइल एक वीक एसिड है
but when we will extract hydrogen from it, then it will form a strong conjugated base. मिथाइल CH4 ये एक वीक एसिड है। जब हम लोग इसमें से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो CH3 नेगेटिव आयन बनता है हमारे पास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। The next slide is about the formation of Grignard reagent. When the alkyl halide react with the magnesium metal and halogen group, it will form organomagnesium compounds, जिसको हम लोग Grignard reagent भी बोलते हैं। अगर हम लोग रिएक्शंस में देखें, अल्काइल हैलाइड RX फर्स्ट रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम हेयर R इज द अल्काइल कंपाउंड्स, X इज द हैलोजन। मैग्नीशियम हैलोजन पे अटैक करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगा हैलोजन्स को, जिसको जैसे हैलोजन यानी कि X पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आएगा और R पे फ्री रेडिकल साइन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल जो अल्काइल का है वो मैग्नीशियम के फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा और RMg बना देगा। इसी तरह मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के नेगेटिव चार्ज के साथ आयनिक नेचर शो करेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स है, फर्स्ट में है मिथाइल आयोडाइड, वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। सबसे पहले मैग्नीशियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और Mg पॉजिटिव और आयोडाइन नेगेटिव बना देगा। मैग्नीशियम जो है अपना फ्री रेडिकल के साथ मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, प्रोडक्ट बनेगा वो है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक पावरफुल बेस है और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। मोस्टली ऑर्गेनो कंपाउंड्स में इसको यूज़ किया जाता है फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, ज़्यादातर अल्कोहल जो हैं इन रिएक्शन के जरिए फॉर्म होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ टाइमॉक्सीफेन इन ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हेटेरोएटम्स। टाइमॉक्सीफेन जो है एक हार्मोन है, हार्मोनल थेरेपी है जो कि हमें प्रिवेंट करती है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डिजीज़ जो कि वीमेंस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। एज आई डिस्क्राइब अर्लियर दैट where RMgX represent R is the alkyl, alkenyl or aryl groups and X will be the halogen groups. Magnesium first react with the halogen and form magnesium positive, halogen negative ions. Then this magnesium positive free radical react with the alkyl free radicals and form RMgX, which is Grignard reagent. Some examples of Grignard reagents are phenyl magnesium chloride, methyl magnesium bromide, and ethyl magnesium bromide. This is all about today's lecture. Next part will be discussed in next video. If you like my videos, then please do positive comment, subscribe my channel and like my video. Thank you so much and Allah Hafiz.